Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in French Revolution, the demand of universal adult franchise. Why these demand creates of universal adult franchise? Universal adult franchise means each person, one vote and one value. Each state had one vote in France. Each state had one vote, but each state had one vote, it means count as a whole assembly. Now the third state demanded vote of each member. Now state had one vote, then against this third state demanded vote of each member. It means every member cast their vote. These are the democratic principles, you know that. So that is the democratic principles, and the demand of third state rejected by King Louis XVI. Demand of third state. What the demand of third state? Vote of each member. It means every member have got voting right. That is their demand of third state. King rejected that demand, and the result of this, member of third state walked out in protest. Against this, when the king rejected their proposal, third state walked out and protest against king's decisions. Now, meet of National Assembly. In the previous video, I have already told you that National Assembly, third state declared himself as a National Assembly. Separate discussion I have already told you. Now the representative of third state assembled in Indo-Tennis court against when the king reject their proposal. Third state walked out and assembled in a tennis court ground. Representative of third state assembled in an indoor tennis court and declared themselves as a national assembly. It means status general convert into national assembly. It means the national assembly, it means state general convert into national assembly. You know that state general is a political body. All states send their representative in state generals. So now state general convert into national assembly when the third state declared themselves as a national assembly. Now drafted a constitution for France. It means National Assembly drafted a constitution for France that would limit the powers of monarch. Limits the power of monarch, it means we talk about constitutional monarchy. Constitutional monarchy, it means power and position of kings decided by the parliament. That is called constitutional parliament. That limit the power of monarch, it means monarch power limited by the National Assembly. Were led by Mirabeau and Abbé Sieyès. These are two persons who led the third state. Mirabeau and Abbé Sieyès. These are the two persons who led the third state and protest
against the king and their decision. Mirabeau from a noble, Mirabeau and Abbé Sieyès, these are important prominent persons in the National Assembly. They led the National Assembly. And Mirabeau from a noble family, that belongs to a noble family, brought out a journal, delivered powerful speech against the king and their decision. Now another person, Abbé Sieyès, wrote a influential pamphlet. It's a pamphlet to promote their ideas through pamphlet. And the name of the pamphlet is What is the Third State? What is the third state? Now these are two topics. Today we discuss demand of universal adult franchise. It means third state demand universal adult franchise. It means third state demanded one person, one vote and one value. It means they demand every person have a right to cast their vote. It's a democratic principles, and that is rejected by the King Louis XVI. After the rejection of their proposal, third state walked out and protested, and they declared themselves as a National Assembly. It means State General converted into National Assembly. Third state declared themselves as a National Assembly, and they drafted a constitution for France. It's a constitutional monarchy. Constitutional monarchy, it means limit the powers of monarch. Powers of monarch limited by the Parliament or National Assembly. And the leaders of National Assembly, it means the leader of third state, Mirabeau and Abbé Sieyès. Mirabeau belongs to a noble family and brought out a general and also delivered a powerful speech. And Abbé Sieyès wrote an influential pamphlet, and the pamphlet name is What is the Third State? Now that is the topic, demand of universal adult franchise and the meet of National Assembly. You know that the National Assembly, third state declared themselves as a National Assembly. So आज हमने हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन में नया टॉपिक स्टार्ट किया है, डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब आप जान रहे हैं कि एवरी एडल्ट हैव गॉट वोटिंग राइट। तो ये इस चीज का डिस्कशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्यों होता है, क्योंकि ईच स्टेट जब वोटिंग की बात आती है, जब मीटिंग बुलाई जाती है थर्ड स्टेट की, ईच स्टेट हैड वन वोट। थर्ड स्टेट ये डिमांड करता है कि एवरी पर्सन हैव गॉट वन वोट। क्यों? क्योंकि जो रूल था फ्रांस में वो था ईच स्टेट हैड वन वोट। पूरा एक स्टेट को, एक पूरे स्टेट को यूनिट माना जाता था और उसे वोटिंग राइट दिया जाता था। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट को एक यूनिट मानते हैं तो 2 वोट हो गया, और थर्ड स्टेट को एक यूनिट मानते हैं तो 1 वोट हुआ। तो मेजॉरिटी जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट की होती। इसीलिए थर्ड स्टेट ने डिमांड की कि ईच मेंबर्स को वोटिंग राइट दिया जाए, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को किंग ने रिजेक्ट कर दिया। किंग ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अपनी पोजीशन को लूज नहीं करना चाहता था। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। किंग के रिजेक्शन के बाद थर्ड स्टेट वॉकड आउट यानी बाहर चला जाता है, और मीट ऑफ नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली की मिलता है। नेशनल असेंबली यानी अब तक स्टेट जनरल की बात हो रही थी, अब नेशनल असेंबली। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल इन इंडोर टेनिस कोर्ट। थर्ड स्टेट के मेंबर जो वॉकड आउट कर जाते हैं वो जो है इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल होते हैं, गैदर्ड इकट्ठा होते हैं, और अपने को वो नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं।
यानी थर्ड स्टेट अपने को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करता है फ्रांस के लिए, जिसमें लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च, यानी जो राजा के राइट्स थे उनको लिमिट में, राजा के पावर्स को लिमिट में किया करने की प्रयास किया गया, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहते हैं, जहां पर राजा और रानी के राइट्स वही होंगे जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, जैसा कि ब्रिटेन में है। थर्ड स्टेट जब मूव करता है प्रोटेस्ट के लिए उस मीटिंग से और डिक्लेयर करता है अपने को नेशनल असेंबली, तो उसे लेड करते हैं, यानी उसे नेतृत्व देते हैं दो लोग, मिराबो और अबेसिये। मिराबो बिलोंग करता था एक नोबल फैमिली से। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, उसने कई जर्नल और किताबें लिखी। एंड ही डिलीवर्ड ए पावरफुल स्पीच, और वो बहुत ही पावरफुल यानी प्रभावित करने वाली स्पीच यानी व्याख्यान देता था। अबेसिये भी इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, प्रभावित करने वाले पैम्फलेट लिखता था, जिसमें से एक पैम्फलेट का नाम व्हाट इज द थर्ड स्टेट ये था। आज हमने दो टॉपिक्स को डिस्कशन किया है। डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्यों डिमांड किया थर्ड स्टेट ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, इसका डिस्कशन हमने किया। कैसे थर्ड स्टेट ने अपने को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया, जो कि अब तक वो स्टेट्स जनरल का हिस्सा था, यानी अब उसने स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया, यानी थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली में कन्वर्ट होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का डिस्कशन होता है, यानी पावर्स ऑफ मोनार्च को लिमिटेड किया जाता है। पावर्स ऑफ ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ये अलाउ भी करता है कि जिसे पब्लिक ने चूज नहीं किया है उसे पब्लिक पर रूल करने का राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आज की डेट में अगर कहीं एग्जिस्ट होती है तो वह ब्रिटेन में है, जहां पर राजा और रानी के राइट्स वही हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। यानी ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम होनी भी चाहिए क्योंकि पीपल अल्टीमेटली सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब आप जान ही रहे हैं, ए कंट्री फ्री टू मेक आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी, यानी एक ऐसा कंट्री जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी विदाउट किसी इंटरफेयर के बना सकता हो, कोई डिसीजन ले सकता हो, वो सॉवरेन नेशन है। तो these are two topics: demand of universal adult franchise and the meat of national assembly.